All right, let's begin. So basically, we're dealing with November 24, October, November, वेरिएंट 41 हम डील कर रहे हैं। तो भाई सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, यू नो द ड्रिल, इट्स द सेम एज ए एस। Section A is your case study, 20 marks. Section B is one essay out of two of micro. पूरा 20 मार्क का एक ऐसे होता है। दैट मीन्स तुम्हारा कंटेंट पक्का होना चाहिए। सेक्शन सी, मैक्रो के दो ऐसे में से एक ऐसे करना है। अगेन, कंटेंट बहुत रेलेवेंट होना चाहिए। सो जो केस स्टडी आई है, the economic impact of extracting natural resources. In fact, this is something that I was talking about before we started this class, जिसके अंदर हमें पता है कि दुनिया में मोस्टली जो लो इनकम कंट्रीज हैं, उनकी इकोनॉमी प्राइमरी सेक्टर पे बहुत ज्यादा रिलायंट है, राइट। और जब हम लो इनकम इकोनॉमीज कहते हैं तो we're टॉकिंग अबाउट दोज जिनका जीडीपी पर कैपिटा इज लॉट ऑन द लोअर साइड, ऑलमोस्ट आई थिंक हम क्या कहते हैं 4,000, what was that amount, that people are earning like less than 30,000 rupees per annum, समझ लो। तो ये आपकी लो इनकम कंट्रीज में हो जाता है। पाकिस्तान वुड बी लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमीज, राइट, एज पर आवर डिस्कशन बिफोर। अब यहाँ पर इन्होंने बात की है कि जी लो इनकम कंट्रीज जो होती हैं दे हैव हाई अनएम्प्लॉयमेंट, बट दे हैव अ वेरी लार्ज डिपॉजिट ऑफ अनयूज्ड नेचुरल रिसोर्सेज। वही केस इन्होंने 2007 में गाना, गाना इज इन अफ्रीका, and they discovered like new offshore oil fields and extraction started in 2010। 17 में डिस्कवर की, 2010 के अंदर एक्सट्रैक्शन शुरू हो गई। दैट्स स्टिल वेरी डिसेंट, 3 साल के अंदर। यूजुअली इट टेक्स टाइम फॉर देम टू बी एबल टू एक्सट्रैक्ट सील, ठीक है। The discovery and extraction of such natural resources can create new jobs, जिसकी वजह से लोगों की इनकम्स बढ़ेंगी, जिसकी वजह से मुल्क का जीएनआई बढ़ेगा। The additional income will lead to an increase in spending, both domestic and imported goods and services, creating further employment in other sectors through the multiplier effect. You should have very clear idea what are we talking about. Multiplier effect होता क्या है? ओके, देयर माइट बी समथिंग अबाउट दैट, लेकिन जस्ट थिंक अबाउट इट। आप कह रहे हो कि आप एक्सट्रैक्शन करेंगे, नौकरियां लगेंगी, लोग पैसे कमाएंगे, लोग जाके डोमेस्टिक और इंपोर्टेड गुड्स खरीदेंगे, जिसकी वजह से और फर्दर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी अदर सेक्टर्स में, मल्टीप्लायर इफेक्ट की वजह से। क्योंकि जब एक बंदा पैसे खर्च, माइंड से पैसे कमाए, फिर उसने जाके ग्रोसरीज वगैरह की, उसमें लोकल भी है, इंपोर्टेड भी है, उसने मोबाइल भी खरीदा, उसने पेट्रोल भी खरीदा, उसने गाड़ी भी खरीदी, उसने मोटर बाइक भी खरीदी। सो इस क्या होगा, वो पैसे मूव करेंगे इकोनॉमी के अंदर और नेशनल इनकम पे एक बड़ा इम्पैक्ट लेकर आएंगे। However, the extraction of oil may crowd out other sectors of the economy. This has happened many times. We've seen this happen in Venezuela का case also. जब आप कोई एक ऐसा एक्सट्रैक्शनरी इंडस्ट्री देख लेते हो तो यू रियलाइज कि यू नो व्हाट, इस पे हम पैसे डालेंगे बहुत सारा और हम सब माइनिंग करेंगे, खूब सारा पैसा कमाएंगे। टर्न्स आउट कि एवरीबडी इज इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर, एंड देन आपके जो बाकी सेक्टर्स होते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स होते हैं, मे बी एग्रीकल्चर सेक्टर्स होते हैं, वो इतने लुक्रेटिव रहते नहीं है। पाकिस्तान के केस के अंदर हमने रियल एस्टेट में इस तरह की चीज देखी है कि जब पाकिस्तान में रियल एस्टेट में लोग देखते हैं कि यार कितने पैसे कमा रहे हैं, हर कोई पैसे रियल एस्टेट में ही कमा रहा है, तो वो अपनी फैक्ट्रियां बंद कर देते हैं और वो जाके रियल एस्टेट के अंदर बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी जो है अपना एक्स्ट्रा कैश जो है वो एक्सपेंशन से छोड़ के वो फिर रियल एस्टेट और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और हाउसिंग प्रोजेक्ट्स और इसमें घुसना शुरू कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपके बाकी सेक्टर्स जो है वो क्राउड आउट हो जाते हैं। दैट मीन्स उसमें से पैसा निकल जाता है।
Workers might move, for example, from agriculture and manufacturing to the mining sector due to higher wages. तो वर्कर की भी एक एक्स्ट्रा ये एक इशू आ रहा है. Also, the prices of houses, land and locally produced goods may increase. तो हम ये सोच रहे हैं कि crowding out की वजह से aggregate supply is falling because बाकी industries में कोई खास काम नहीं हो रहा. So that will आहिस्ता आहिस्ता से will cause the prices of things to go up. This could increase the cost of living and discourage businesses from operating in the affected regions. तो एक और इशू जो है हमारा स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का नजर आ रहा है इधर. ऑलराइट. उसके बाद the export of oil from Ghana causes an inflow of US dollars, increasing the exchange rate of Ghana's currency, the cedi. तो नाउ यू शुड फॉरेन से समझ जाओ, अगर गाना एक्सपोर्ट कर रहा है तो फॉरेनर्स विल पे देम, एंड क्योंकि ऑयल का ट्रेड हैपेंस इन पेट्रो डॉलर्स यानी डॉलर करेंसी है, तो बेसिकली गाना गवर्नमेंट गेट्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डॉलर्स. लेकिन उसमें इशू ये होता है कि अगर वो डॉलर्स भी आ रहे हैं पाकिस्तान आपकी गाना की गवर्नमेंट के पास, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो तो उसको रुपये अपनी सेडी जो करेंसी है उसमें कन्वर्ट करेंगे. So the demand for the local currency is going to go up as a result of that. ठीक है, स्टेट बैंक will get a lot of dollars, but इकोनॉमी में there is going to be a rise. इसको हमने जो एएस में बड़ा सिंपली पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि अमेरिकन को गाना से ऑयल खरीदने के लिए उनको गाना की लोकल करेंसी सेडी जो है वो जरूरत होगी. तो वो बेसिकली उसको इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड करेंगे. This appreciation reduces the competitiveness of Ghana's agriculture and manufactured goods, leading to an increased demand for imports. So you remember that expensive currency means import becomes cheap and export becomes expensive. This loss of competitiveness is referred to as the Dutch disease, reflecting the experience of the Netherlands following the exploitation of their natural gas reserve. समझ आ गई बात. डच नेदरलैंड से इन्होंने लिंक किया हुआ है. आई डोंट नो इफ यू नो, बट इफ यू गो बैक इनटू द हिस्ट्री, हम जो जमाने में पैदा हुए हैं हमने देखा है दुनिया में एक ही माई बाप है विच इज अमेरिका. और हमने सुना है कि इससे पहले जो है देयर वाज द सोवियत यूनियन एंड द अमेरिकन, राइट, और द ब्रिटिश एम्पायर. लेकिन उससे भी पीछे चले जाओ तो देवर अ लॉट मोर अदर सिविलाइजेशंस एंड कम्युनिटीज व्हिच वर वन ऑफ द बेस्ट. उसमें आपकी डच सोसाइटी वाज आल्सो वन ऑफ देम. दे वर, यू कुड से दैट दे वर वन ऑफ द सुपर पावर्स इन द वर्ल्ड बैक इन द डे. तो यूजुअली क्या होता है जो हमने यूएस के केस में भी देखा है, व्हेन यू हैव एन एक्सट्रीम सरप्लस इन योर ट्रेड अकाउंट, there are, this is whatever I'm telling is general knowledge and might link to a little bit of this. So even with US, we've seen that why did we say US is the superpower and why are we saying that China can be the superpower? It is because that these nations have a current account surplus. They're exporting a lot to the world and the world is buying their product, which makes this economy a very important economy in the world, right? So when they have this surplus, because of this worldwide importance of the goods that they're selling, and US also had uh, basically आप वर्ल्ड वॉर टू के बाद कहो तो यूएस के पास भी सरप्लस था उनके करंट अकाउंट के अंदर. बट वक्त के साथ क्या होता है कि जब इस तरह की आपके पास पावर आ जाती है तो यू नो व्हाट हैपेंस इज दैट योर करेंसी स्टार्ट्स टू बिकम पावरफुल because everyone desires your currency to buy your goods. When your currency becomes strong, फिर आपकी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है और दूसरों को आपके गुड्स महंगे पड़ते हैं. तो फिर वही डच डिजीज की यही बात कर रहे हैं बिकॉज वी सीन दिस हैपन इन द पास्ट एंड यूएसए इज आल्सो इन अ वेरी लार्ज डेफिसिट फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम. 60 से डेफिसिट हिट करना शुरू कर दिया है उन्होंने, 60-70 कह लो, राइट, which basically now, fast forward, has put a big pressure जिसकी वजह से the Trump and the US administration is doing all this tariff वाला scenario.
कि हम इतना ज्यादा बाहर से गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहे हैं that we have a deficit, a lot of our money is flowing out and not much is coming back in. So we have to borrow money from Federal Reserve, and the mulk is getting into debt, and now we can't pay our debts off, and that has put our country into big trouble. So let's put tariffs and let's turn the cycle around. But obviously it's not going to happen. This is the collapse of things, and that's what it. अब आप ये लोग ये कह सकते हो कि ये करेंसी के साथ ये जो अभी कर रहा है यूएस, ये बेसिकली अपने कोलैप्स को और फर्दर थोड़ा सा डिले करने की कोशिश कर रहा है. Some are saying that they are actually accelerating the whole collapse, all are saying. But we do notice that US and their policies about contracting and now focusing on themselves rather than being an expansionary economy as it was in the day. तो ये आपका डच डिजीज और इसका बैकग्राउंड है बेसिकली. तो चलो इस तरह का कभी कुछ यूज हो गया, although they've explained you the whole idea. Oil provides the Ghanaian government with revenue from the tax on each barrel of oil produced. This revenue can be used to provide transfer payments and goods and services such as roads, health facilities, and public services. These can benefit both households and businesses. Alternatively, the presence of such revenues can create corruption and conflict. ये तो I think it's pretty basic standard कि जो टैक्स से पैसे आएंगे उसको वो हम लोगों पे लगाएंगे, लेकिन हमने देखा है कि लोगों पे तो नहीं लगता. करप्शन और आपस में पॉलिटिकल पार्टीज ही लड़ रही होती है कि who's gonna get a better share of it and who's gonna do more corruption. एकदम ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है हम पाकिस्तान का केस स्टडी पढ़ रहे हैं. Right? So stop comparing yourself with who you're comparing with. This is our reality now. So between 2011 and 2018, ये वाला डेटा यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं कि किस तरीके से. All right, so how do we read this data? You have a key given. Manufactured exports ये लिखे हुए कितने परसेंट ऑफ कितने परसेंट ऑफ व्हाट ऑफ एक्सपोर्ट. तो ये आपका मैन्युफैक्चर है. मैन्युफैक्चरिंग इफ यू सी 2011 से मैन्युफैक्चरिंग के नंबर्स हैव रिड्यूस्ड सिग्निफिकेंटली एंड दे हैव बीन ऑन द रिड्यूस्ड साइड फॉर लॉन्ग. ओवरऑल आखिर तक तो बहुत ही रिड्यूस्ड है. तो मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री नॉट डूइंग सो वेल. फ्यूल एक्सपोर्ट को अगर देखा जाए तो फ्यूल एक्सपोर्ट के अंदर अगेन आफ्टर फाइंडिंग एंड एक्सट्रैक्शन ना, उन्होंने कहा ना 2007 से 2010 में आपने डिस्कवर किया और 2010 के बाद आपने एक्सट्रैक्शन शुरू किया, तो दिस बिकम्स अ बिग चंक ऑफ इट. जहां तक आपकी दूसरी ओर एंड मेटल एक्सपोर्ट है उसमें भी हमने ड्रॉप देख लिया है ओवरऑल, और एग्रीकल्चर के अंदर भी देखें तो एग्रीकल्चर में भी ड्रॉप आ गया है. तो आई गेस वो जो डच डिजीज की बात, सॉरी जो क्राउडिंग आउट की बात कर रहे हैं, वी कैन सी दैट हैपनिंग. डेटा अच्छा इन्होंने बना के दिखाया है. दैट्स अ गुड डायग्राम स्ट्रक्चर ऑफ एक्सपोर्ट्स के ऊपर. फिर उसके बाद देयर इज अनदर थिंग, एक एक्सट्रैक्शन उठा के दिया है. दे हैवंट मेंशन्ड कहाँ से, बट एक और एक्सट्रैक्शन दिया है जिसमें एचडीआई के नंबर्स दिए हैं 0.55, 0.61. तो देयर इज एन इंक्रीज इन एचडीआई, वेरी माइल्ड इंक्रीज. जीएनआई हैज डबल्ड in 12 years. That's pretty decent. HDI has not improved so much. पर एक्सचेंज रेट, $1 में कितने सेडीज मिल सकते हैं? $1 में 1.06. और रियली दैट्स क्रेजी. और $1 के अंदर अब सिर्फ 0.17. दैट्स हाउ स्ट्रॉन्ग देयर करेंसी इज. आई डिड नॉट नो. दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग करेंसी टेक्निकली देखा जाए तो. इंटरेस्टिंग. सो लेट्स बिगिन. केस स्टडी के अंदर ऑब्वियसली तुम्हारे पास ABCD तक के ऑप्शंस होते हैं. इसके अंदर एक आध हैवी हैं, जिसकी वजह से देर आर नो स्मॉल. वैसे तो देखा जाए यूजली दे आर लाइक 2, 4, 6, 6, इस तरह से कुछ ब्रेक डाउन होता है. All right, so with the aid of a diagram, explain the effect of natural resources, resource development on the potential of the growth.
All right. So obviously, if they're giving on questions for 4 marks, that means कि जी आपने जो है थोड़ा लंबा करना है, राइट? अब डायग्राम की जहां तक बात है, इन्होंने ये नहीं बताया कौन सा डायग्राम, लेकिन एएफ को क्योंकि हमने किया है तो एक हमारी आदत होनी चाहिए कि जब पोटेंशियल की बात होती है तो मेरी नजर में तो दो ही डायग्राम्स आई कैन थिंक ऑफ, देयर सेइंग डायग्राम नॉट डायग्राम्स। तो वन ऑफ द टू दैट आई कैन मेक इज नंबर वन, आपका पीपीसी वाला जहां पे आपका कंज्यूमर गुड एंड कैपिटल गुड, प्लीज पूरा लिखोगे आप, और इस तरह से पीपीसी बना के और पोटेंशियल को आप इस तरह से शो कर सकते हो। दिस वुड बी वन ऑफ द वेज टू डू इट। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि क्योंकि पोटेंशियल की बात हुई है तो हमें पता है पोटेंशियल तो हम एक एल आर ए एस में भी देखते हैं। तो इवन इफ यू डू दैट वन, इसमें मैं पूरे लेबल लिख लेता हूँ, प्लीज यही लिखोगे, रियल आउटपुट, एंड इधर लिखोगे प्राइस लेवल। और एल आर एस तुम्हारी मर्जी है, केन्सियन व्यू बनाओ या कौन सा क्लासिकल व्यू बनाओ, बट यूजली वी लाइक टू वर्क विद द केन्सियन व्यू। तो इस तरह से एल आर एस करके दिखा दो, और इसकी एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हो। ठीक है, सो इधर ऑफ द टू इज फाइन, यू शुड गेट अराउंड 2 मार्क्स फॉर द डायग्राम। एक मार्क लेबल का होगा, एक मार्क शिफ्ट का होगा। और फिर एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ नेचुरल, तो फिर तुमने ऑब्वियसली एक्सप्लेन करना है कि जब आप ज्यादा नेचुरल रिसोर्स डेवलप करेंगे, ज्यादा एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो उसकी वजह से आपके पास ज्यादा रिसोर्स अवेलेबल होंगे, that will allow the country to produce more output, basically, right? So along that line, I think you should write an answer, and I think you will be good. कुछ ज्यादा इसमें है नहीं इस particular question के अंदर। Yeah, so this is what they've said. एक मार्क, नेचुरल रिसोर्स डेवलपमेंट विल इंक्रीज द पोटेंशियल ग्रोथ, किस तरह से, देर नॉट सेइंग, आई थिंक यू शुड। LRAS will move outwards या PPC will move outwards। एक मार्क एक्सेस लेबल के लिए, एक मार्क शिफ्ट दिखाने के लिए, बहुत ही इजी 4 मार्क, तो जबरदस्त सीन हो जाएगा तुम लोग के लिए तो। फिर उसके बाद एक्सप्लेन हाउ द एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल resources in Ghana will create further employment in other sectors through the multiplier effect। देखें जी प्लीज, एक तो नंबर वन, केस स्टडी के अंदर ये चीजें होती हैं तो केस स्टडी को जरूर यूज किया करो ना अपनी आंसर स्ट्रक्चर्स के लिए। तो अगर वो तुम्हें कह रहा है कि एक्सप्लेन करना है, हाउ विल इट फर्दर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा थ्रू द मल्टीप्लायर इफेक्ट, आई थिंक मैंने इसकी वैसे तो एक्सप्लेनेशन तुमको दी ही थी, पर इफ आई गो अप, ये किधर है ये सारी बातें, या दिस वन राइट हियर, additional incomes will lead to an increase in spending on both domestic goods and imported goods, right? यहां से मैं अगर ये लाइन उठा लेता हूँ ना, तो ये लाइन बेसिकली मेरे आंसर के अंदर मुझे सॉर्ट ऑफ हेल्प कर रही है। ठीक, तो मैं यहाँ से ये लाइन उठाऊंगा, कितने मार्क का है, 4 मार्क का है। फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा मल्टीप्लायर को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि मल्टीप्लायर के अंदर एग्जैक्टली होता क्या है। मल्टीप्लायर के अंदर होता है कि जो पैसे माइनिंग से आएंगे, वो जब इकोनॉमी के अंदर फर्दर स्पेंड होंगे डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड के लिए, तो उसकी वजह से और फर्दर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी एज मेंशन्ड इन दिस, राइट? तो एक बेसिक अगर तुमको याद हो, क्योंकि मल्टीप्लायर का वर्ड यूज होता है ना, तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है कि इसका मतलब ये होता है मल्टीप्लायर का, इफ यू रिमेम्बर व्हाट वाज द कॉन्सेप्ट, कि जब भी इकोनॉमी में किसी किस्म की इंजेक्शन होती है, और इंजेक्शन इस केस के अंदर आप एक्सपोर्ट ही कह रहे हैं, एक्सपोर्ट इज एन इंजेक्शन, राइट? तो दैट गोज थ्रू अ मल्टीप्लायर इफेक्ट एंड क्रिएट्स एन इम्पैक्ट ऑन द नेशनल इनकम। ये असल आपका मल्टीप्लायर है, दैट एनी इंजेक्शन having a larger effect on the national income। ठीक है, from I think you should use like the words like injections, export is an injection,
और फिर वो किस तरीके से नई जॉब क्रिएट करेगा और लोगों को नई नौकरियां मिलेंगी तो इनकम्स क्रिएट होंगी। और तो थोड़ा बहुत मेरा ख्याल है केस स्टडी को जरूर यूज करो, दिस इज वेयर योर आंसर रियली लाइज। और फिर आपका ये मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट विद द होल इंजेक्शन का इम्पैक्ट ऑन दैट। So this should give you about 4 marks. Let me see what they are saying. Okay, 1 second. So this is what they are saying. Okay, क्या कह रहे हैं? 2 marks for understanding of the multiplier. जरूर अच्छा सा एग्जाम्पल दिया करो. And 2 marks for application of application using the case study. तो I've suggested कि case study को कैसे यूज करना है. वही लाइन वहीं से कॉपी भी कर दोगे ना तो हम तुमको मार्क्स दे देंगे. कि somehow suggesting कि you know आर्टिकल में जैसे लिखा हुआ है कि जब नई जॉब्स क्रिएट होंगी तो उसकी वजह से लोग और फर्दर पैसे कमाएंगे और वो डोमेस्टिक गुड्स पे स्पेंडिंग करेंगे और फर्दर नौकरियां क्रिएट होंगी. ऑल ऑफ दैट. Absolutely not. Don't make a diagram over here. They haven't asked for a diagram. Don't make the diagram. Don't waste time with the diagram. लेकिन अगर तुम डायग्राम बनाते हो just with the idea कि it will help you explain your multiplier effect, then do it. Right? But again, सिर्फ डायग्राम बना दिया हो and you're not explaining कि किस तरह से injection will lead to a larger impact, then it's missing, right? The key element is missing there. Explain what the information means by the Dutch disease and using figure 1.1, consider to what extent Ghana suffered from this problem. I think again they've been very kind to basically explain you the whole Dutch disease ka concept. Okay, that when the country exports a lot, then their currency is going to appreciate. And because of their currency appreciating, they will lose competitiveness, right, in the other industries. Uh, Obviously, don't make it so general the way I just explained. You have to personalize it to the Ghana's experience because that's what they want in the question. एंड देन दे वांट कि तुम एक्सट्रैक्ट को यूज करके इस इंफॉर्मेशन को और फर्दर कॉन्क्रीट दिखा दो. तो आई थिंक वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट कि किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, मेटल्स के अंदर और एग्रीकल्चर के अंदर वी आर सॉर्ट ऑफ सीइंग फॉल. Right? If you compare, there is a fall that has happened. Uh, right? In fact, initial scenario से, not this. Let's compare it to 2010 को compare करेंगे हम यहाँ पे तो we see a drop. Agriculture के अंदर भी देखें तो we see a drop. Metal के अंदर भी देखें so we see a drop. So that is sort of like showing, right? This fall was due to the appreciation. Absolutely. That is the Dutch disease that your currency, due to export, your currency appreciates. And as a result, your exports become too expensive, import becomes cheap, and उसकी वजह से आपका export hurt होना शुरू हो जाएगा. Right? So that's how you can explain it. But again, case को personalize जरूर जरूर करो. So let me show you how you're getting the mark. तुमको पहले भी मैं बता चुका हूँ. We are very very picky with how to give you marks. चीज लिखी भी होगी, बेशक वेगली लिखी भी हो लेकिन लिखी भी होगी तो मार्क मिलेगा. नेचुरल गैस डिस्कवर होने की वजह से और एक्सपोर्ट होने की वजह से नेदरलैंड का एक्सचेंज रेट बढ़ा, जिसकी वजह से उनकी मैन्युफैक्चरिंग महंगे हो गए, जिसकी वजह से उनका एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट गिर गया. और आर्टिकल के अंदर भी हम देख सकते हैं कि किस तरीके से देर इज मैन्युफैक्चरिंग के अंदर देर इज अ फॉल. दे वांट यू टू साइट इट. चार्ट 2 वुड सपोर्ट द क्लेम. चार्ट 2 कौन सा है? चार्ट 2, व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट? चार्ट, व्हाट इज चार्ट 2? दिस वन आर दे टॉकिंग अबाउट? इट्स एक्सप्लेनिंग कि आपका एक्सचेंज रेट जरूर ऊपर गया है बट मैन्युफैक्चरिंग और उस पर तो कुछ हमको नजर नहीं आ रहा. तो आई गेस यू जस्ट रिलाई ऑन दिस. मैन्युफैक्चर्ड, एग्रीकल्चर, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं. या ऑलराइट. फिर उसके बाद द लास्ट वन, यूज द इंफॉर्मेशन टू assess
The impact of the extraction of oil on the standard of living in Ghana. You have to use the information above. तो आई गेस हम तो साफ नजर ही आ रहा है और बेसिकली ऑब्वियसली असेस करने की बात है तो दैट मीन्स वी नीड टू फॉर एंड अगेंस्ट, लेकिन यूज द इंफॉर्मेशन टू असेस लिखा हुआ है। तो पहली चीज हम देख सकते हैं एचडीआई में इम्प्रूवमेंट है, जीडीपी पर कैपिटा के अंदर इम्प्रूवमेंट है। तो दिस sort of shows that yes, the country's standard of living is definitely going up. देखो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का हमने लास्ट क्लास में भी एक ऐसे किया था, तो डोंट टेक इट लाइटली। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को जब हम कंपेयर करते हैं तो वी आर ऑलवेज लुकिंग एट द मटेरियल एंड नॉन मटेरियल एस्पेक्ट्स है, राइट। लास्ट टाइम के ऐसे में वी हैड दिस डिस्कशन, so प्लीज मेक श्योर यू see our the recent past papers की videos जिसके अंदर we've talked about the standard of living का concept. When we say material, we mean that rising income allows people to buy more goods, more variety, better quality stuff, right? That directly affects their living standards. But on the other hand, जब हम non-material की बात करते हैं, then we're looking at your accessibility to a cleaner environment or a health-related education and services, stuff like that. कितना लेजर आवर है आपके पास, कितनी अनपेड आपको लेजर टाइम दिया जा रहा है जो MEW में मेजर होता है। तो एक तरफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बिकॉज इट्स एन 8 मार्क क्वेश्चन, वी आर लुकिंग एट लीस्ट मैक्सिमम तुमको 4 मार्क ही मिलेंगे एक तरफ का आर्ग्यूमेंट करने में। तो यू शुड हैव लाइक एटलीस्ट अ गुड एक्सप्लेनेशन कि लोग अच्छी नौकरी कमा रहे हैं, तो अगर उनकी जॉब्स इंक्रीज हो रही हैं तो उनकी इनकम्स राइज होंगी। फिर साथ में ये भी मेंशन है कि GNI राइज कर रहा है तो नेचुरली जो है लोगों की जो इनकम्स हैं उसमें इजाफा आ रहा होगा। फिर उसके अलावा एक्सट्रैक्शन के अंदर तो नहीं है, बल्कि या HDI का नंबर्स ऊपर जा रहे हैं। इसके अलावा क्या है, के अलावा तो आई थिंक उसके अलावा तुमको मेकअप मेड मेड थोड़े अपने खुद की टर्मिनोलॉजी बनानी पड़ेंगी। वर्स्ट केस यू डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू राइट, यू कम अप विद योर ओन स्टफ। फिर उसके बाद यू ऑब्वियसली हैव टू काउंटर कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डज नॉट नेसेसरली हैज टू गो अप। तो भाई अब इसके अंदर बात यह है कि नंबर वन GNI इज राइजिंग, GNI पर कैपिटा, बट वी ऑलवेज स्पोकन अबाउट कि GNI में एक इशू है, ये पर कैपिटा ये एक एवरेज है। it does not mean that you have an equal distribution of income in your economy. So this is like one serious point. फिर उसके बाद जब आप एक्सट्रैक्शन करेंगे तो डेफिनेटली देयर इज गोइंग टू बी इश्यूज ऑफ पोल्यूशन, देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी issue of exploitation of workers, right? So that is definitely one on the negative side. ठीक, so maybe like they haven't mentioned, I think there's a lot of data that is required जो आपको थोड़ा बहुत लोगों का लेजर टाइम के बारे के अंदर या आपका what do you call that, working hours and working conditions, right? इसको क्या कहते हैं, वर्क कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली आपकी कैसे हैं, right? So there's all of these, आपके पास कितने labor laws हैं to protect workers and all of that. And then obviously finally give a good conclusion. मेरी नज़र के अंदर देखें जी, it's not definitive कि there's going to be a rise in the standard of living of everybody, पर जब आपकी GDP ऑलमोस्ट 2400 से 25 नियर 2500 से नियर 5500 पे जा रही है, तो ओवरऑल हर किसी में कुछ ना कुछ तो इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए, राइट। सो समथिंग अलोंग दैट लाइन यू कैन टॉक अबाउट, क्योंकि देखो एक कुछ खास आर्टिकल के अंदर तो नहीं दिया हुआ, राइट, काउंटर वगैरह, तो इसलिए देयर इज नॉट मच वी कैन टॉक अबाउट ओवर देयर। ऑलराइट, एक्सेलेंट। So today we're going to practice something. What we're going to practice is we're going to look at the two questions and we're going to think of a thought process. How are we going to decide which question to attempt? भाई पहला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट इन मेनी कंट्रीज आर promoting policies that reduce the impact of a negative externalities.
Evaluate using appropriate diagrams the extent to which two policies used to reduce negative externalities can also improve allocative efficiency. I think we have done exactly a question like this. You probably got it for your mock or tests or something or the other. I'll give you a sample one today, show you some diagrams on it, but it's one of those questions which will be attempted. As compared to question number three, evaluate the consequences for the price and output of a firm if it changes its objective from profit maximization to sales maximization as a response to the principal agent problem. क्वेश्चन ये भी बुरा नहीं है, बट अगर तुमको प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम नहीं आता तो फिर ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा। प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम को नहीं करो, लेकिन क्योंकि तुम लोग मार्केट स्ट्रक्चर्स में इतने एफिशिएंट हो गए हो कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और सेल्स मैक्सिमाइजेशन तुम समझते हो, तो इवन इफ यू राइट अ वेरी एक्सटेंसिव कंटेंट ऑन दैट विद डायग्राम, लेवल टू के लिए तो क्वालिफाई हो जाओगे। issue will be a little bit on the evaluation side for you if you don't include the principal agent problem. Uh, but I do still see a catch over here. Profit maximization to sales maximization. If you misunderstand sales maximization को sales revenue maximization से, तो now you are at level one for sure. Understood? तो मेरी नजर के अंदर जो काफी हद तक बच्चे होंगे जो बहुत अच्छे से एक्सटर्नैलिटीज पढ़ के गए होंगे, ओवरवेलमिंगली आई वुड से कि एक्सटर्नैलिटीज के क्वेश्चंस हमको ज्यादा नजर आएंगे। but then 60-40, I would say 60-40 का रेशो होगा, more towards externalities than that। ठीक है। तो फिर उसके बाद लेट्स टेक अ लुक एट मैक्रो के अंदर दो क्वेश्चंस हैं। इन पीरियड ऑफ राइजिंग एंड persistent inflation, consumers and workers change their expectations of the future rate of inflation। You know what this is about? Philip curve. We need a Philip curve here. Evaluate with the help of a diagram or diagrams the consequence of these changes of expectations for fiscal policy। All right, so fiscal policy, again, last 50 pages के अंदर there's a lot of evaluative and how they work and all of those things। अच्छे से diagram, ADAS के diagrams भी बन सकते हैं इसके अंदर, बहुत कुछ हो सकता है again। Or question number five, in recent years, many countries have joined or established a free trade area। Evaluate with the help of a diagram or diagrams whether membership of an FTA is always beneficial to a country। I think 90-10 I would look at kids attempting the question number five as compared to question number four। I think we're looking at more question four than five। Okay, G, let's do this. Let's do this. Come on. FTA, let me go back. So the question is in FTA, if you don't talk about the union, you have to talk about the union। Free trade area is kind of economic integration, right? It's sort of like countries getting together। Now, I don't know if you need to use the word union, but as long as you're telling me the idea that the countries are, the member countries आपस के अंदर free trade कर रहे हैं without any tariff, और किसी नॉन मेंबर के साथ एक कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ लगा रहे हैं, और फिर एएस के अंदर जो हमने वो डायग्राम बनाया था, वो डायग्राम अगर आप बना देते हो ट्रेड वाला, तो वो बना के और फिर उसके बाद बेनिफिट्स एंड ट्रेड क्रिएशन और ट्रेड डाइवर्जन का डिस्कशन करते हो, तो जबरदस्त हो जाता है। इट्स अ रीजनेबल क्वेश्चन टू अटेम्प्ट अगर इफ यू नो ऑल ऑफ दैट स्टफ। Okay, G. Government in many countries are promoting policies that reduce the impact of the negative externalities। They're mentioning over here negative externalities, right? Negative externalities, they're not mentioning are they talking about from the pollution, from the production point of view or from the consumption point of view?
Because remember that we do have externality in two ways. Negative externality या external cost की बात अगर आप करें, basically they're talking about external cost over here. तो एक्सटर्नल कॉस्ट आपकी दो साइड पे होती है, एक कंजम्पशन की साइड पे जो आप डीमेरिट गुड्स के केस में देखते हैं, ये कंजम्पशन की साइड है, और एक प्रोडक्शन की साइड जहाँ पे जो आपके एक्सट्रैक्शन प्रोसेसेस होते हैं उसके अंदर जो पोल्यूशन वगैरह का डिस्कशन हम करते हैं, दैट इज फ्रॉम द दिस इज फ्रॉम द प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, जिसके अंदर आप कहते हैं जी जो सोशल कॉस्ट है दैट इज ग्रेटर देन द प्राइवेट कॉस्ट, राइट। लेकिन ये वाला जो है, दिस वन इज फ्रॉम द कंजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, और कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कहते हैं जी जो मार्जिनल सोशल बेनिफिट है वो कम है मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट से, राइट, बिकॉज इट्स क्रिएटिंग अ नेगेटिव इफेक्ट, नेगेटिव थर्ड पार्टी इफेक्ट। बट नीचे आते हैं, evaluate using appropriate diagrams the extent to which two policies used to reduce negative externalities and that can improve allocative efficiency. Now, when they talk about allocative efficiency, I need you to do your whole thing about the market failure and what allocative efficiency is. एलोकेटिव एफिशिएंसी के आप दो आइडियाज को कर सकते हो कि किस तरह से, एक जब हम बात करते हैं फ्री मार्केट के केस के अंदर तो हम कहते हैं भाई allocative efficiency occurs in a free market where P is equal to MC, where demand is equal to supply and the resources are allocated in the best possible way. लेकिन जब हम बात करते हैं in the case of a market failure कि भाई मार्केट्स जो है वो फेल कर जाती हैं इन सर्टेन टाइप्स ऑफ गुड्स एंड एक्सटर्नैलिटीज के केस के अंदर, तो वहां हम कहते हैं कि जी असल में जो एलोकेटिव एफिशिएंसी होती है वो होती है जहां पे सोशल बेनिफिट इज इक्वल टू सोशल कॉस्ट। दैट मीन्स जहां पे इकोनॉमी के अंदर एक्सटर्नैलिटीज बोथ फ्रॉम द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन साइड को जब आप फैक्टर इन करते हैं और उस हिसाब से आप प्रोडक्शन करते हैं, सो दैट देर इज नो अंडर एलोकेशन और ओवर एलोकेशन एज पर द फ्री मार्केट का प्रॉब्लम। But remember, the question is not about these things, but rather it is about the two policies that you want to use in order to somehow reduce the consumption, consumption or production, and somehow reduce the quantity that is being produced of this. मेरी नजर में majority of the kids are going to take this from this point of view, and their essays mostly going to be about this, the production side, the pollution side, कि जब आप कोई चीज प्रोड्यूस करते हैं तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स आते हैं, राइट। so let's go over the marking scheme for a second. कहते हैं ये लोग सबसे पहली चीज जो इस क्वेश्चन के अंदर जो स्टैंडर्ड कुछ चीजें होनी होनी चाहिए, एक तो explanation of the term negative externality. You know what that is? You define negative externality and you don't use the word like spillover. You don't use the word like true cost. There's a problem. That means तुम पढ़ाई सही नहीं कर रहे हो. You need to use these words. These are examiner's favorite words. Okay? तो पहली तुमने एक पहले तो पूरे क्वेश्चन का इंट्रो बनाना है जिसके अंदर जितनी भी टर्मिनोलॉजीज यूज हुई हैं उसके थ्रू तुमने प्रूफ करना है कि हाँ जी मार्केट फेलियर है। ठीक है, पहले आपने नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज को समझा दिया, फिर आपने नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज को एग्जांपल के साथ समझा दिया। ओवर हियर यू कैन गो इनटू द डीमेरिट एंड पोल्यूशन वाला साइड फ्रॉम द प्रोडक्शन साइड। आई थिंक यू कैन डू बोथ। ओके, जब तक जनरल चल रही है बातें। फिर उसके बाद आपने दिखाना है किस तरह से देर इज एन ओवर प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स हैपनिंग, और आप इसमें मेंशन नहीं हुआ हुआ बट आई थिंक यू शुड explain what allocative efficiency is. Okay, what is market failure and what is allocative efficiency, where the demand and supply forces fail to provide a socially optimum quantity uh, in the market. Free market, allocative efficiency occurs where P is equal to MC, whereas in the case of the social welfare point of view, it occurs when
द मार्जिनल सोशल बेनिफिट इज इक्वल टू द मार्जिनल सोशल कॉस्ट। ठीक है, फिर उसके बाद आप डायग्राम बनाएंगे। मेरी नज़र में I'll show you the diagram in just a bit. You do all of that and qualify for a little bit of an L2 sort of a thing, right, with the diagram. But then again, please come towards the two policies. जो हमारी दो पॉलिसीज हैं, स्टैंडर्ड कर लो प्लीज दो पॉलिसीज को। एक ये पोल्यूशन के केस में पोल्यूशन परमिट का बहुत अच्छा है, और एक इनडायरेक्ट टैक्सेशन इज अ गुड इनफ वन। ये दो अच्छी पॉलिसीज हैं। जस्ट नैरो इट डाउन टू दीज टू एंड देन टॉक अबाउट इट। सो suggestion here. So this is one of the essays that the way you can write this, and देख लो क्या कर रहे हैं, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज की बात कर रहे हैं। So हम कह रहे हैं नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज occur when the production or consumption of a good imposes cost on the third party, right? On the third party who are directly not involved in the transaction। क्या जबरदस्त डेफिनेशन है। ये तो मैं एएस में एक जमाने पहले करता था until they eliminated the need for this one। बट देन अगेन ना, इसके अंदर मैंने उसकी बात नहीं की है ना, स्पिल ओवर और ये। तो प्लीज मेक श्योर दैट एट दिस पॉइंट आई वुड लाइक you to include the words like it's the spillover, right? It doesn't show the true cost, something along that line. Not along that line, exactly a word. External cost reflected in the market price, leading to misallocation of resources and a loss of allocative efficiency। एक जो कॉमन एग्जांपल है वो पोल्यूशन है, जो इंडस्ट्रीज के अंदर होता है। इसका जो डायग्राम बनाओगे, दिस इज द डायग्राम आई एम गोइंग टू मेक फॉर दिस। दिस इज द डायग्राम यू आर गोइंग टू मेक फॉर दिस आल्सो, क्योंकि पहले तो आपने प्रॉब्लम दिखानी है। एंड मोस्ट ऑफ यू आर सेंडिंग मी द करेक्ट डायग्राम्स ऑलरेडी, जिसके अंदर तुम टैक्सेशन की भी बात कर रहे हो। बट whether they give you mark for this or not, I am telling you you should do it। एक्स और वाई एक्सिस अक्सर हम भूल जाते हैं कि क्या चीज एक्स और क्या चीज वाई एक्सिस पे जानी चाहिए। तो प्लीज 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 थोड़ा कॉन्शियसली इन एक्सिस को देखा करो, अदरवाइज पीपीटी जैसे डायग्राम के अंदर भी तुम प्राइस और क्वांटिटी लिखोगे। मैं नहीं कह रहा कि दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, बट ऑल आई एम सेइंग इज दिस इज व्हाट यू कैन डू। सो आई एम नॉट मेकिंग अ जजमेंट कॉल हियर ऑन यू पीपल, बट ख्याल कर लेना प्लीज। तो बेसिकली दिस इज वेयर द मार्केट इज प्रोड्यूसिंग। बट क्योंकि आप पोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तो आप कहते हैं कि मार्जिनल सोशल कॉस्ट जो है वो ज्यादा है, एंड वील अस्यूम कि ये जो गुड है ये कोई इट्स जस्ट रेगुलर प्राइवेट गुड। इट्स नॉट some sort of a merit or a demerit good, and this is where the social welfare quantity is। और मार्केट फेलियर क्या है? ये आपका मार्केट फेलियर है। यू रिमेम्बर दैट, हमेशा क्यू एम के ऊपर हम वर्टिकल डिस्टेंस देखते हैं। तो ये मार्केट फेलियर है। जब तक क्वांटिटी क्यू एस डब्ल्यू पे नहीं आ जाती है, आपका मार्केट फेलियर होगा। ठीक हो गया। सो दिस इज व्हाट यू हैव। उसके बाद हम और फर्दर, ये फिर मैंने नीचे पूरी डायग्राम की एक्सप्लेनेशन ही की हुई है कि देखें जी, इन अ फ्री मार्केट द फर्म प्रोड्यूसेस वेयर एमपीसी इज इक्वल्स टू एमपीबी, ignoring the marginal social cost। This leads to overproduction and underpricing। मतलब कि इसकी जो एक्चुअल प्राइस होनी चाहिए वो ऊपर होनी चाहिए, बट एज योर डायग्राम इज शोइंग दैट द प्राइसिंग इज लो। एंड द रीजन व्हाई मैं प्राइसिंग को बीच में ला रहा हूँ इज बिकॉज द क्वेश्चन इज सॉर्ट ऑफ लाइक टॉकिंग अबाउट दैट। So this leads to overproduction and underpricing with quantity at QM exceeding the socially optimum quantity which is QS। ठीक है, और आपका ये डेड वेट लॉस क्रिएट हो रहा है उसकी वजह से। सो आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द डायग्राम। दिस इज अ गुड इंट्रो, गुड स्टार्ट। एलोकेटिव एफिशिएंसी थोड़ा सा मिसिंग है। आई वुड हैव यूज्ड द डायग्राम टू टॉक अबाउट हाउ allocative efficiency in free market is happening over here, but according to from the externalities point of view, the true allocative efficiency would actually occur over here। So market is definitely underproducing। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट इंटरवीन कर सकती हैं टू इंटरनलाइज दिस एक्सटर्नल कॉस्ट। व्हाट डज दैट मीन इंटरनलाइज? कि मतलब भाई तुम सोसाइटी पे नुकसान कर रहे हो, तो ये तो अच्छी बात नहीं है, ये तो तुमने बड़े मजे से एक्सटर्नलाइज कर दिया है
जो मसला तुम क्रिएट कर रहे हो, वी टॉकिंग टू द मैन्युफैक्चरर। तो हम चाह रहे हैं कि चलें जी, अब ये कॉस्ट को आप खुद बेयर करें, अपने स्ट्रक्चर में इंटरनलाइज करें, यानी बेयर द कॉस्ट। ठीक है। तो मूव द मार्केट टुवर्ड्स अ मोर एलोकेटिव एफिशिएंसी आउटकम व्हिच इज दिस वन, एसडब्ल्यू के ऊपर लेके आना है। तो वन कॉमन पॉलिसी इज इनडायरेक्ट टैक्सेस। यू विल एक्सप्लेन व्हाट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स इज imposed ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो भी मैन्युफैक्चरर है उसके ऊपर जब आप लगाएंगे, तो अब आपका जो अगला डायग्राम बनेगा वो किस तरह का होगा। तो लेट मी शो यू दी सेकंड डायग्राम जो टैक्सेशन का है। तो टैक्सेशन का डायग्राम भी जो आप बनाएंगे ना, तो प्लीज मेक श्योर कि आप रखें उसको इसी रेफरेंस के अंदर। कौन से रेफरेंस के अंदर? लेट मी शो यू वन सेकंड। कॉस्ट एंड द बेनिफिट, एंड ये आपका प्राइवेट बेनिफिट, ये आपका प्राइवेट कॉस्ट। ठीक है, ये आपका मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट, ये आपकी मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट। दिस इज वेयर द मार्केट प्रोड्यूसेस। और अभी हमने देखा था कि किस तरह से जो सोशल वेलफेयर क्वांटिटी थी, दैट वाज स्लाइटली ऑन टू द लेफ्ट ओवर हियर, राइट। तो अगर हम किसी तरीके से अपना जो मार्जिनल कॉस्ट है, कॉस्ट, प्राइवेट कॉस्ट का क्या मतलब होता है? द कॉस्ट विच द प्राइवेट सेक्टर इज बेयरिंग, राइट, दे हैव टू पे। अब इसी पे अगर हम टैक्स लगा दें, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन एज अ रिजल्ट? तो ये जो हमारी लाइन है एमपीसी की, इट विल स्टार्ट गोइंग अप, राइट। तो मैं, और ये हमारी वही, आ, मैं ये लिख सकता हूं इधर, राइट। मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट प्लस टैक्स जो है वो एक्चुअली इक्वल्स टू मार्जिनल सोशल कॉस्ट के बराबर हो गई है आपकी। तो टेक्निकली दिस इज द डायग्राम दैट यू मेक इन ऑर्डर टू शो कि देखें जी, हमने जब टैक्स लगाया तो हमारी प्राइवेट कॉस्ट को आपने इंटरनलाइज कर लिया बाय मेकिंग देम पे दिस कॉस्ट। ठीक है, विच वॉज इक्वल टू द सोशल कॉस्ट, एंड नाउ वी रीच द सोशल ऑप्टिमम लेवल। और फिर यही चीज हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जब आप इनडायरेक्ट टैक्स लगाएंगे तो जो सप्लाई कर्व है एमपीसी का, इट विल मूव टूवर्ड्स द एमएससी, इन द सेंस ऑफ के, इधर मैं ऐड कर लेता हूँ कि वो जो हमारा एमपीसी था, एमपीसी प्लस टैक्स की जो लाइन है वो बेसिकली एमएससी के बराबर हो जाती है। और उसकी वजह से इफ यू नोटिस प्राइस भी ऊपर चली जाती है, थोड़ी बेहतर ट्रू पिक्चर पे चली जाती है, और क्वांटिटी सोशल उसके ऊपर आ जाती है ऑप्टिमम पे। तो फॉर इंस्टेंस अ कार्बन टैक्स इंक्रीजेस प्रोडक्शन कॉस्ट for polluting firms and then incentivizing them to either reduce the emission or pass the higher cost on to the consumers through higher prices. Sometimes it might encourage them to, अच्छा लिखा हुआ होगा, the tax not only discourages harmful goods and consumption but also generates government with some revenue, and which can be also funded for environmental beneficial projects. इनफैक्ट जब फर्म को ये हिट होगा ना, तो हो सकता है वो भी अपने आप को लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए डायनामिक एफिशिएंसी का सहारा लें। डायनामिक एफिशिएंसी अगर आपको याद हो, डायनामिक एफिशिएंसी इज व्हेन you forgo current efficiency for future efficiency by investing in new innovative methods of production that can help you lower your average costs in the future। ठीक है, और ये लॉन्ग रन पॉलिसी ही होती है। However, setting the correct level of tax requires precise information about the size of externalities, which is often difficult। ये मैं यहाँ पे mention कर रहा हूँ एक थोड़ा सा, एक बहुत ही एक teaser sort of a thing, but this will be really discussed in my evaluation। ठीक है। ये लाइन इज नॉट नेसेसरी मेरी ओपिनियन के अंदर, बट बिकॉज एएस के साथ मेरी तो एक आदत हुई हुई है, तो मैं एक काउंटर इवैल्यूएशन के लिए एक स्टेटमेंट यहाँ छोड़ देता हूँ, बट इट्स नॉट नेसेसरी एज सच। फिर उसके बाद जो हमारा अगला मेथड है, दूसरा मेथड वी वांट टू यूज इज द पोल्यूशन परमिट्स। पोल्यूशन परमिट्स का भी एक डायग्राम बनेगा बाय द वे। तो अगर हम डायग्राम की बात करें, सॉरी माय बैड, पोल्यूशन परमिट्स का अगर हम डायग्राम बनाएं तो उसका डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। पोल्यूशन परमिट्स जो होते हैं बेसिकली दैट अलाउज द कंपनीज एंड द कंट्रीज कि आप कितनी पोल्यूशन कर सकते हैं इन द
इन अ ईयर, ठीक है। तो क्वांटिटी ऑफ, ये असल में कहलाए जाते हैं ट्रेडेबल पोल्यूशन परमिट्स, राइट। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ नीचे थोड़ा सा, ये ट्रेडेबल पोल्यूशन परमिट्स की बात हो रही है, ठीक है। एंड दिस वुड बी द प्राइस ऑफ दोज परमिट। इसके अंदर जो सप्लाई होती है वो परफेक्टली इनइलास्टिक होती है, और जो डिमांड है वो इस तरह से बाय द फर्म्स इट्स डाउनवर्ड स्लोपिंग, which sort of sets a price of these permits in the market, ठीक है। what happens is कि अगर अगर आप इकोनॉमी के अंदर, क्योंकि आप पोल्यूशन को लिमिट करना चाह रहे हैं, तो यू कैन एक्चुअली रिड्यूस द अमाउंट ऑफ permits that you are allowing to float. What that does is it creates a shortage and it causes the prices to go up. So some firms might feel that it's not affordable anymore. Let's cut down on it. Do you understand that? तो ये इस तरह से sort of pollution permits का diagram बनता है. These are perfectly inelastic lines. ठीक है. तो इसकी explanation जो है ये यहाँ हमने लिखी हुई है. A limited number of permits are used, capping the total level of pollution allowed. Firms that can reduce pollution at a lower cost have an incentive to do so and sell their excess permits to firms that find it more expensive. Does that make sense? कि फर्म को पता है कि भाई पोल्यूशन तो करना है, एक्सपेंशन करनी है, तो माइट एज वेल कट डाउन ऑन आवर पोल्यूशन, लेट्स सेल दीज परमिट्स एंड मेक सम मनी ओवर दैट rather than making the goods and selling it. Let's just make money of this. So this creates a market for pollution rights. By the way, these are called pollution rights, and encourages cost effective pollution reductions. The supply of permits is perfectly inelastic. uh, In pollution permits, the only government policies to allow market forces to behave freely. Uh, Pollution permits, when you say market forces, that means demand and supply. तो मैं तो indirect taxes और subsidies को भी एक तरीके से market forces, because market forces are operating in those also. आपने टैक्स लगाया एंड देन द डिमांड एंड द सप्लाई विल डिसाइड कि हमने किस प्राइस पे कितना बेचना है. तो फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इज गोना ऑपरेट इवन इन इनडायरेक्ट टैक्सेस इन माय ओपिनियन. इट्स गोइंग टू ऑपरेट इवन इन गिविंग पीपल नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग कि ये हार्मफुल गुड्स हैं, इनको मत यूज करें. राइट, यू रिमेंबर ये इसमें हम बात करते थे, इंफॉर्मेशन फेलियर का जो इशू है उसको ठीक करना. दैट कैन ऑल्सो बी वन ऑफ योर पॉलिसी बाय द वे, राइट. So one major, sorry, I was here. So supply is perfectly inelastic, and the market determines the price based on the firm's demand for pollute, जो यहाँ पे हमने diagram में show किया. Over time, the government can reduce these numbers, जो मैंने यहाँ पे show किया, and that will show कि किस तरीके से prices will rise and firms will have no other choice but to move towards uh, stimulating investments in green technologies and dynamic efficiencies towards these things. Well, so there's a good question. Question is about when the firms are selling their pollution permits to other competitors. So isn't that like giving the competitors chance to survive in the market rather than driving them out of the market? Um, बिल्कुल हो सकता है. Firms, if it's a very competitive environment where you can feel that yeah, you have the ability to monopolize the industry, there is a possibility. But remember, the firms that are operating in the market, the competitor, they will also be somehow trying to make themselves efficient, because it's sort of like the game theory wala scene. If I don't do it, they do it, they do it, they benefit, I harm, I am harmed from it. So it's sort of like we are sort of like bid against each other. But in the short run, what can happen is कि अगर firms के पास excess ability है, maybe they're not selling their
required quota and they have the permits, तो वहां पे वो उसको बेच के पैसे कमा सकते हैं. So there is an incentive to somehow catch up on the money there. And you can charge a higher prices क्योंकि अगला अगर अच्छा मार्केट में काम कर रहा है and they desperately need, they're going to pay you good money for it, right? So it's not a bad idea to make some money off there also. But I see what you're saying, yeah. And definitely they obviously बिल्कुल possibility होती है इन चीजों की. While both indirect and pollution permits are theoretically effective at improving, so I'm sure by this statement you must have understood what we're doing, right? So we're moving into the sort of like uh, the domain of evaluation. So while both indirect taxes and pollution permits are theoretically effective at improving allocated efficiency, their real-world success is limited by several. One major issue with indirect taxes is information failure. Even after taxes laga rahe hain, people might continue to consume the product because they don't realize the harmful effects of it. They need the product, maybe the goods are inelastic. Accurately estimating the size of the negative externality or फिर tax कितना लगाना है. If you do it too much, that's a problem. If you do it too low, that's a problem. Okay, on consumers and producers. Additionally, many indirect taxes are regressive. I hope you know, remember that. जो कि अमीर और गरीब के वर्सेस गरीब को ज्यादा बुरी तरीके से हर्ट करता है. एग्जाम्पल फ्यूल के केस के अंदर. So this raises concern about equity. You know what that means? Equity. Equity is about क्योंकि regressive है तो वो अमीर और गरीब में जो है अमीर को अभी भी फायदा पहुंचा रहा है गरीब को ज्यादा हर्ट कर रहा है तो वी हैव अ प्रॉब्लम हियर. Furthermore, the actual incidence of tax depends on the elasticity of demand and supply. So, sort of like basically, we're giving you a counter of taxation. Pollution permits, on the other hand, faces another issue, which is about the monitoring and enforcement. कि भाई मेरे पास परमिट नहीं है लेकिन मैं फिर भी पोल्यूशन कर रहा हूँ मैं फिर भी तरीके ढूंढ रहा हूँ किसी तरह से टू सेल. So measuring emissions accurately is technically demanding and costly, and if regulations are weak, firms may find ways to cheat the system. फिर साथ में market manipulation is also a risk where large firms can buy up excess permits to restrict competition. The same point as we were discussing just now. कि अगर आप monopoly बन सकते हैं तो you will actually use it in your favor or artificially inflate the permits. You get the point, right? So please make sure that in your evaluation you do these counter arguments. And then finally, furthermore, both policies assume rational behavior from firms and consumers, whereas जहां तक हम behavioral economics की बात करते हैं, that suggests that individuals may not always respond predictably to price signals, क्योंकि rationality is not always there. So government intervention itself can fail. Okay, it can be poorly designed. There can be a lot of lobbying that can happen against what you're trying to do. आपकी administrative inefficiencies हो सकती हैं, मतलब कि your ability to implement and enforce these. So despite these limitations, both indirect taxes and pollution permits represents important tools in moving market closer to allocated efficiency. देखें जी ऊपर से नीचे तक ऐसे के अंदर whether you talk about taxation and policies to correct every single last line of your paragraph should use the word allocative efficiency and some sort of connection to it. You don't do that and we have a problem. Understood? हर उसके अंदर हर every single paragraph that you're doing in the end, and if you notice in the essays above, every single essay की every single paragraph की almost last few lines के अंदर we are sort of talking about the efficiency. We need to connect it to the efficiency. And it should not be very subtle. It should be right there in the face of the examiner. क्योंकि this is what it means that you are really answering the question. कि policy जो मैंने बताई है, how it works
And will it do what we want it to do? Allocative efficiency. Will it do what we want it to do to the price? You remember? Let's not forget. Oh, इसमें प्राइस की बात नहीं थी तो प्राइस की fair है. Price is not the issue. I will go with it. So this is our first essay of the day. Let's move on to the next one. ये तो बड़ा अच्छा सा question है. बहुत ही simple सा है. I'll go very fast with this one. Evaluate the consequence for the price and output of a firm if it want to change its objective from profit maximization to sales maximization in response to a principal agent problem. पहली बात तो समझ लें principal agent problem है क्या. Principal agent problem ये है कि जो ओनर है और जो वर्कर है उन दोनों के बीच के अंदर देयर इज अ गैप इन देयर ऑब्जेक्टिव्स. Worker might be working for their bonuses, which might be tied to the volume or the revenue. Owner is mostly for the profit or maybe for the growth of the firm. Okay. So, because they have a divorce between the two aims that they're working towards, there is a good possible chance that the firm might not be able to achieve either of the two. खास तौर पे अगर फर्म प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग का ऑब्जेक्टिव लेके चल रही है तो वो तो बिल्कुल ही फेवर करता है आपके शेयर होल्डर्स को और मे बी ओनर को. लेकिन दूसरे एंड के ऊपर जो आप सेल्स मैक्सिमाइजेशन पे जा रहे हैं, यू आर गोइंग फॉर द मैक्सिमम वॉल्यूम एंड उसकी कंडीशन है ए आर इक्वल्स टू ए सी. इट्स नॉट एम आर इक्वल्स टू जीरो. दैट्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन. इफ दे वांट रेवेन्यू दे गोना कॉल इट सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन. अंडरस्टूड. अब यहाँ पर आप अपने वो डायग्राम्स बनाएंगे और उस डायग्राम्स के थ्रू आप शो करेंगे कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन एंड ऑल ऑफ दैट. विल टेक अ लुक एट दैट इन जस्ट अ बिट. ओके जी. So as per the marking scheme, a very small few things that they want. Firstly, brief definitions. अब ये जरूरी नहीं है कि तुम exactly इसी तरह से लिखो. You can first talk about profit maximization and how the firms can achieve that and do some diagrams of it. And then you go for the sales maximization and then you show कि वो कहाँ होगा and what will be the price and the output. Because remember, the question is about the price and the output, right? Price and the output. So you want to bring that in with your diagrams. You don't make diagrams, you're in trouble. Comparison of the pricing and output decisions of the alternative और उसका फिर आपने दिखाना है. By the way, जो डायग्राम आपका बनेगा इस केस के अंदर बड़ा सिंपल सा डायग्राम है. In fact, let me walk you through the essay which I have suggested sort of. All right, let's start. So एक छोटा सा sort of like a mild all firms want to work for profits, right? Profits के लिए firms, that's one of the most traditional objectives that a business can have. So firms traditionally aim to maximize profit by producing the quantity of output where MR is equals to MC. This output and price combination maximizes the difference between the total revenue and the total cost, allowing owners or shareholders to achieve the highest possible return on their investment. ठीक है जी. यहाँ जो मैं डायग्राम देख रहा हूँ वो ये डायग्राम है. आप चाहो तो एक ही में दोनों बना सकते हैं पर या क्वांटिटी, प्राइस, डिमांड, MR, MC. This is where the firms will produce to profit maximize, and this is the price that they are going to charge, right? That's the intention. फिर उसके बाद ये जो रेवेन्यू और कॉस्ट में ग्रेटेस्ट डिस्टेंस है, दिस इज जस्ट एन आइडिया आपको हम दे रहे हैं, राइट? इसका भी एक डायग्राम बनता है बट दैट्स नॉट नेसेसरी.
However, in many large firms where ownership and control are separate, the principal agent problem can arise. The principal agent problem occurs where the objectives of the owner diverges or is different from one of the managers who is the agent. Managers का usually जो bonuses होते हैं वो that can be tied to the volume or the revenue, whereas shareholders obviously wants profit. Where managers aim to maximize the volume of the sales, possibly because of their salaries, bonuses, or prestige, depends more on the size of the firm rather than their profitability. ठीक है? तो ये आप एक डाइवोर्स की बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम को भी समझा दिया। फिर आपको कह रहे हैं हम कि अगर आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से सेल्स पे जाते हैं तो योर आउटपुट डिसीजन अंडर इज एम आर इक्वल्स टू एम सी, लेकिन जो आपका रिलेटिवली हाईएस्ट उसके ऊपर आता है इन कॉन्ट्रास्ट, वो बेसिकली एवरेज कॉस्ट आपकी कवर होनी चाहिए। सो आई विल इन दिस डायग्राम what I'll do is I'll introduce my average cost. So this is how I'll do it. थोड़ा सा abnormal profit को ही लेते हुए चलेंगे, मिनिमाइज कर रहा हूँ मैं मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर, and this is how I'm drawing it. And so if I do this, थोड़ा सा मेरा minimization off है, let me do my minimization a little more appropriately. Uh, yeah, something like that. Average cost. And so उससे हमें पता लगता है कि this is the quantity that हम sales के केस के अंदर, this is the quantity that I will be making, and this is the price that I will be charging. The prices are lower, the volume is more, win-win situation for at least the consumers. They're going to benefit hell out of it. So that's a good thing. फिर इसकी further explanation के अंदर in contrast, when managers aim to maximize sales, they seek to produce the highest possible output while covering their average cost, ensuring the firm is making a break even. Break even अच्छा है, normal profit का word use करो. The equilibrium output under sales maximizations occur at AR equals to AC. Beyond this point, the firms will be making losses. So obviously, ये आपका largest volume है. So as a result, the sales maximizing firm will produce higher quantity at a lower price. I know बहुत लंबी कर रहे हैं एक ही बात को repeat different ways कर करके, but that's how the expansion sort of works. They still have something to say. So this change can be illustrated using the diagram. वो मैंने diagram ऊपर बना दिया और diagram को तुम एक दफा explain जरूर किया करो. So thus when a firm shifts from profit maximizing to sales, it reduces its price and increases its output. मेरी नजर के अंदर इसके अंदर मार्क उठाना इजी है, थोड़ा सा तुमको फ्लावरी करने की जरूरत है. You do that and you know it's not bad. इवैल्यूएशन के अंदर आ जाते हैं. ऑब्वियसली वी वांट टू से कि देखें जी, जो आपका प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम था, बेसिकली दैट इज व्हाट यू वर ट्राइंग टू सॉर्ट. तो विल इट रियली सॉर्ट इटसेल्फ आउट और नॉट, तो वो अब हमने वैल्यूएशन के अंदर करना है. While sales maximization leads to a lower price and greater output, generating welfare benefits for consumers, as we mentioned, it has broader consequences for the economy and the firm itself. जब आप प्राइस कम करेंगे, sales maximization results in a transfer of consumer surplus. You remember that? By the way, diagram के थ्रू भी आप ये बात शो कर सकते हैं कि जब आपका ये डायग्राम इस तरह से था, तो पहले आपका कंज्यूमर का जो सरप्लस था वो सिर्फ ये छोटा सा ट्राइंगल था, एंड नाउ इट हैज इंक्रीज्ड बाय quite a lot, almost more than doubled. So there has been a significant improvement in that. So that's a very positive thing that is coming out of this. Moreover, the increase in output can contribute to greater market access and potentially reduce inequality and all of that. So अभी भी हम थोड़ी सी फोर एक इंट्रो को लेके चल रहे हैं. However, from an economic efficiency perspective, sales maximization may misdirect resources. Firms focusing purely on sales rather than profitability might
प्रोड्यूस मोर देन द सोशली ऑप्टिमम लेवल, कि ये गुड कुछ ज्यादा ही प्रोड्यूस हो गया है. बाय द वे, एलोकेटिव एफिशिएंसी अकर्स वेयर पी इज इक्वल्स टू एम सी. अगर आप नोटिस करें तो allocative efficiency is happening over here and the firm is actually producing beyond that. तो आप allocative efficiency के भी beyond चले गए हैं, which might not be taken as a very positive thing. ठीक है? So that's one problem that we're talking about. However, from the economic efficiencies perspective, sales maximization may misdirect resources. ठीक है, ये हो गई बात. Resources that could have been used in a more productive, high value industries. बेसिकली अभी उसी बात को लंबी कर रहे हैं हम, कि वही रिसोर्सेज कहीं ज्यादा अच्छी जगह यूज हो सकता था, बेहतर एफिशिएंसी पे यूज हो सकता था, बट वी चूज और वी प्रमोटेड to do this. Okay. Additionally, many managers may enjoy greater salaries and prestige under sales maximization, and the owners will suffer from it. तो ओवर टाइम फर्म्स के अंदर जब ये इश्यूज आएंगे, तो फर्म्स जो है अपनी इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन और डायनामिक एफिशिएंसी जो फ्यूचर के लिए अच्छी होनी थी, उसमें से पैसा निकाल देंगे, बिकॉज दे विल फील दैट इट्स नॉट एज प्रॉफिटेबल, राइट? So the actual impact of change in objective will depend on market condition. In highly competitive markets, firms may have limited ability to alter price significantly. तो हो सकता है कि वो ज्यादा जो है प्राइस के अंदर इफेक्ट ना ला सकें, जैसे हमारा डायग्राम वाज शोइंग. Right? So conversely, in oligopoly or monopolistic markets where firms are more pricing power, तो वहां तो आपकी बिल्कुल ही प्राइस के अंदर हमने भी देखा है कि एक तरीके से यू डोंट हैव मच पावर टू एक्चुअली हैव एन इम्पैक्ट. तो इट दिस होल थिंग जो हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम की, आई आई डू सी के इस ऐसे के अंदर थोड़ा सा जो है इसके अंदर कम बात हो रही है. पर आइडिया इज कि ये जो आपने प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम के अंदर जो रिस्पॉन्स के बदले में जो आपने ये डिसीजन किया, शुरू के अंदर यू हैव टॉक्ड अबाउट कि किस तरह से क्या होती है प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम, और उसकी वजह से उस मसले को हल करने की किस वजह से आपने प्रॉफिट से सेल्स की तरफ की मूवमेंट की. बट असल में जो इवेल्युएशन है दैट इज अबाउट द प्राइस एंड आउटपुट ऑफ द फर्म बिकॉज ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव चेंज. और उस प्राइस और आउटपुट को वुड यू बी एबल टू चेंज और नॉट, असल में दी क्वेश्चन वाज विद दैट. तो वंस यू टॉक्ड अबाउट द प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम एंड व्हाई यू आर चेंजिंग द ऑब्जेक्टिव, उसके बाद उसकी प्राइस और आउटपुट की डिसीजंस को हमने थोड़ा ज्यादा ग्रेटर डिटेल में देखना था. तो दैट इज व्हाट वी डन. बट इफ यू नोटिस इन बोथ द टू essays 2 and 3, efficiency and dynamic efficiency is somehow being brought in, right? So make sure that you are also able to do that, कि आप प्राइसिंग चेंज कर सकेंगे कि नहीं, उससे फायदा होगा कि नहीं, आउटपुट बढ़ेगा कि नहीं. तो स्टफ लाइक दैट, दैट इज योर इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट इन द एंड फॉर दिस वन. सो क्वेश्चन नंबर 4, इन पीरियड्स ऑफ राइजिंग एंड persistent, प्लीज ख्याल करो ये दो वर्ड का, कि there is a rising inflation, that means the percentage is going up, which is bad, and it's a persistent inflation, that means it's not fluctuating. So consumers and workers, they have to change their expectations of the future rate of inflation, right? So evaluate with the help of diagrams the consequence of these changes of expectations for fiscal policy. I hope you know what this fiscal policy is. I hope you know what inflation is. Please do define what is inflation. It is the general rise in the price level of goods and services in an economy in a given period of time. Um, once you've explained that, फिर आप जाएंगे अपना a few things over here that you should be talking about. वर्कर्स की बात हो रही है और कंज्यूमर्स. ऑब्वियसली इन्फ्लेशन से कंज्यूमर पे इम्पैक्ट आता है और वर्कर्स की वेजेस के ऊपर इम्पैक्ट आएगा.
राइट। और साथ ही में थोड़ा बहुत अनएम्प्लॉयमेंट का डिस्कशन जो है, ये असल में ये लाइन पहली दो लाइन पढ़ के मेरे दिमाग के अंदर जो आया वो आया फिलिप कर्व। बिकॉज फिलिप कर्व टॉक्स समथिंग विच हैज टू डू विद एक्सपेक्टेशन। जो आपका वो होता है ना, ऑगमेंटेड expectation augmented Philip curve. So that is what has come to my head. So for that reason, even what they are suggesting also is that the kids have to take that first line where they define inflation. आसान है ये तो, ये में करके आ चुके हो. The idea of something called Nairu. Remember what that is? I've talked about this Nairu concept. The non-accelerating inflation rate of unemployment. Non-accelerating inflation rate of unemployment. What does that really mean? What it means is कि देखें जी, इकोनॉमी के अंदर unemployment can be at 90, sorry, can be 0%. That means everybody is working. It can be 1, 2, 3, 4, 5%. It can be 10% unemployment. होता यह है कि when there is an increase in aggregate demand, let's say in this case through fiscal policy, expansionary fiscal policy आप करते हैं, एडी शिफ्ट करता है राइट पे. एडी जब राइट पे शिफ्ट करता है तो हमने पढ़ा है इन्फ्लेशन भी आती है और इकोनॉमिक ग्रोथ भी आती है और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है. तो अगर एडी राइट पे जाने की वजह से, राइट, एडी राइट पे जाने की वजह से अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है तो दैट मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट फॉल हो रही है. अनएम्प्लॉयमेंट के गिरने से इन्फ्लेशन आ रही है इस केस के अंदर. नायरू का कॉन्सेप्ट ये है कि आपकी इकोनॉमी में इतना वर्कफोर्स आइडल बैठा है, अनएम्प्लॉयड है, कि अगर एडी बढ़ता है और डिमांड आती है वर्कर्स की, तो वो जो अनएम्प्लॉयड वर्कर है दे आर नॉट गोइंग टू आस्क फॉर हायर वेजेस because they're unemployed. They're willing to work for the given wage rate. So inflation is not going to happen. Okay? That's the idea of non-accelerating inflation कि आपकी इकोनॉमी में इतनी अनएम्प्लॉयमेंट प्रेजेंट है कि वो इन्फ्लेशन को एक्सेलरेट नहीं होने देगी. वर्कर्स खप जाएंगे डिमांड के साथ. ओके, दैट्स द आइडिया. अभी मैं इसकी पूरी वो भी दिखा देता हूँ सैंपल. Expectations mean workers and consumers, they have to change their perspective about the future rate and they're going to have an impact on their decision making. Workers के लिए salaries and consumers के लिए demand for goods. The use of ADAS analysis to show how inflation works, and this may be referred to as cost push and demand pull. AS का टॉपिक आ गया. फिर उसके बाद ऑब्वियसली जब आप कॉस्ट पुश और डिमांड पुल करते हैं तो वही मेरे जो लास्ट 50 पेजेस के अंदर जब हम बात कर रहे थे ऑफ द फिलिप कर्व, उसमें मैंने दोनों तरीके से तुमको डिमांड पुल और कॉस्ट पुश दोनों डायग्राम के साथ हमने प्रूव किया है कि मूवमेंट अलोंग द फिलिप कर्व हैपेंस बिकॉज ऑफ द डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड शिफ्ट इन द फिलिप कर्व हैपेंस बिकॉज ऑफ द कॉस्ट पुश का व्यू. ओके. एंड किस तरह से उसके बाद पूरा एक हमने राइटअप दिखाया है कि किस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट गिरेगी, इन्फ्लेशन आएगी और फिर वेजेस बढ़ेंगी और फिर आप वापस से ओरिजिनल लेवल्स पे आ जाएंगे. एंड द गवर्नमेंट विल कीप ऑन डूइंग दैट. देन दे वांट एन एनालिसिस ऑफ फिस्कल पॉलिसी ऑन चेंजिंग अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन. किस तरह से वो एक्सपेंशनरी पॉलिसी को यूज करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए, और इन्फ्लेशन अनफॉर्चुनेटली दे विल हैव टू बेयर. और फिर किस तरह से ये पूरा इम्पैक्ट आएगा, मैक्सिमम 2 लेवल इफ नो डायग्राम इज मेड. अब देख लो इसको क्या कह रहे हैं. So we start off by defining the term unemployment. Inflation is defined as sustained increase in the general price level.
in an economy in a given period of time. One important concept linked with inflation is unemployment, and linked to inflation and unemployment is the non-accelerating rate of unemployment, which represents the level of unemployment at which inflation remains stable. However, in period of rising and persistent inflation, consumers and workers, this is not part of Nairo, but yeah. However, in periods of rising and persistent inflation, consumers and workers begin to change their expectations about the future rate of inflation. Rather than assuming inflation will remain low, they anticipate price will rise continuously and they're going to ask for higher wages. ये basically इन्होंने थोड़ा जल्दी ये वाला intro दे दिया है. ये हमारा आगे question के अंदर this would have been discussed and this will be discussed. Okay. Expectation plays a powerful role in economic behavior. क्योंकि remember question के अंदर expectations की बात हुई है, तो I want to a little emphasize on that. क्योंकि अगर आप फ्यूचर में एक्सपेक्ट करेंगे दैट देयर इज गोइंग टू बी एन एक्सेलरेटिंग एंड persistent inflation, तो यू नो एज वर्कर एंड यू नो एज कंज्यूमर कि आपकी जो नॉमिनल वेज है, जो आपकी मॉनेटरी वेज है, उसकी परचेजिंग पावर फ्यूचर में कम हो जाएगी, राइट? सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आप जाके वेजेस मांगेंगे, और जब वेजेस मांगेंगे तो कॉस्ट कुछ इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम आएगा, और जब आपका एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगा, तो उसकी वजह से फिर क्या होगा? फर्म्स आर गोइंग टू एक्सपीरियंस सो रियल आउटपुट, प्राइस लेवल, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, ओके। और जब वर्कर्स वेजेस ज्यादा मांगेंगे तो एग्रीगेट सप्लाई विल शिफ्ट टू द लेफ्ट लाइक दिस, the price is going to rise, the real output is going to fall, prices for goods will go up, the workers will again ask for higher wages. तो बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि जब एक्सपेंशनरी पॉलिसी गवर्नमेंट करती है जिसकी वजह से एडी राइट पे जाता है, तो इन्फ्लेशन आती है। इन्फ्लेशन आती है, वर्कर्स का गुजारा नहीं होता, वो हायर वेजेस मांगती हैं। हायर वेजेस से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है, एग्रीगेट सप्लाई पीछे जाता है, प्राइसेस और मजीद ऊपर जाती हैं। फिर वर्कर्स जो है वो फिर दोबारा से जो है हायर वेजेस मांगेंगी, तो उसकी वजह से जो है फिर से इन्फ्लेशन आ जाएगी, और मजीद। तो वेज एंड प्राइस स्पाइरल इज कि ज्यादा वेजेस मांगने से प्राइसेस बढ़ेंगी, प्राइसेस बढ़ने से ज्यादा वेजेस डिमांड होगी, वेजेस डिमांड होने से और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आएगी और प्राइसेस बढ़ेंगी, एंड दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू। ये स्पाइरल है, मतलब इट विल जस्ट कीप ऑन हैपनिंग। So firms facing higher wage cost then increases their prices, okay, will then increase their prices to maintain profit margins, creating a wage spiral that pushes inflation even higher. This dynamic can shift the short-run aggregate supply curve to the left as production becomes costly, और ये हमने दिखा दिया कि ये, बाय द वे, इसको आप स्टैगफ्लेशन भी कहते हैं, ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी होती है। अगर मैं तुमसे बोलता हूँ ये कौन सी टाइप ऑफ इन्फ्लेशन है, तो यू गोइंग टू से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, यू नॉट गोना से स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन का वर्ड यूज होता है फॉर द आइडिया, जो कि होता ऑलमोस्ट प्रीटी मच कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के थ्रू ही, बट व्हेन यू हैव हायर इन्फ्लेशन एंड योर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज राइजिंग, इकोनॉमिक ग्रोथ इज राइजिंग, उसको आप स्टैगफ्लेशन कहते हैं। यूजिंग एन एग्रीगेट एडीएस फिजिकल पॉलिसी, जब गवर्नमेंट इंक्रीज करती है स्पेंडिंग और टैक्सेशन को कम करती है एडी को बढ़ाने के लिए, व्हाई? बिकॉज देयर एजेंडा इज कि हम अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना चाहते हैं। तो जब वो अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने की कोशिश करेंगे तो ऑब्वियसली वो एक्सपेंशनरी पॉलिसी यूज करेंगे। जब वो एक्सपेंशनरी पॉलिसी यूज करेंगे तो उसकी वजह से आपका जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है दैट इज गोइंग टू शिफ्ट टू द राइट, राइट। तो उससे आपकी इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ भी आएगी,
और साथ में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, ठीक है, बाय इंक्रीजिंग द टैक्सेशन एंड सॉरी रिड्यूसिंग द टैक्सेशन एंड increasing the government spending. So this is what it is basically going to do. ठीक है, तो फिर हम आते हैं हमारी एक्सपेक्टेशन फिलिप कर्व की तरफ। वन सेकेंड। अब जो आपका एक्सपेक्टेशन फिलिप कर्व है, आई वुड लाइक टू ड्रॉ इट फॉर अ सेकेंड। या आपका जो ऑगमेंटेड फिलिप कर्व हमने बनाया है, अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेज वाइज गोज हियर, इन्फ्लेशन परसेंटेज वाइज गोज हियर। ये आपका शॉर्ट रन फिलिप कर्व होता है। Imagine this is the level of unemployment we have and this is the inflation rate that we have. Okay जी। गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट कम करने के लिए एक्सपेंशनरी पॉलिसी यूज करती है, एडी को बढ़ाती है। ओके, एडी को बढ़ाती है। एडी को बढ़ाते हैं तो क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट गिरती है और इन्फ्लेशन आती है। तो दैट मीन्स वी मूव दिस वे to this point where unemployment falls, inflation rises. Workers are unable to afford goods and services, and they expect that inflation is not going to remain here, but rather is going to go up. They're going to go and ask for higher wages. When they ask for higher wages, cost of production goes up, aggregate supply shifts to the left, the prices goes up, unemployment goes back to the same level. That means unemployment rises. Do you see what is happening? Unemployment भी बढ़ रही है और inflation भी आ रही है. What this does is it shifts your short run Philip curve upwards because you are experiencing both a rise in unemployment and a rise in inflation. And you come back to this point here. Do you understand this? तो ये मेरे वही दो डायग्राम, this causes a movement along the Philip curve and this causes a shift in the Philip curve. एंड इस तरीके से गवर्नमेंट बार बार अनएम्प्लॉयमेंट कम करने के लिए एक्सपेंशनरी पॉलिसी करती जाएगी और बड़े से बड़ी पॉलिसी करेगी, और वर्कर्स उन पॉलिसी को बार बार दे विल एक्सपेक्ट दैट दिस विल हैपन एंड दे विल रिएक्ट, एंड व्हाट इट विल डू इज it will bring unemployment to the same level over and over again. एंड लॉन्ग रन में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट तो वहीं के वहीं रहेगी, लेकिन इन्फ्लेशन जो है ये इस तरह से बार बार अनएम्प्लॉयमेंट विल कम बैक टू द सेम लेवल ओवर एंड ओवर अगेन। ये आपका लॉन्ग रन फिलिप कर्व होता है वैसे, जस्ट फॉर योर नॉलेज। ये आपका नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होता है। ये आप कह लो लॉन्ग रन फिलिप कर्व कह लो, नायरू कह लो, natural rate of unemployment कह लो, they all mean the same thing, which means that economy के अंदर आप बार बार अपने natural rate of unemployment पे जाएंगे। क्यों? क्योंकि every attempt the government tries to do to reduce unemployment, the workers will recognize that they will ask for higher wages, which will create cost push inflation and take unemployment level back to the same level. You understand this? तो ये हमारे इसके अंदर है। तो लेट मी सॉर्ट ऑफ एक छोटा सा पैराग्राफ इसकी बात कर लेते हैं। The expectation augmented Philip curve offers another way to analyze these developments. The traditional Philip curve suggests a stable relationship between unemployment and inflation. Lower unemployment came at the cost of inflation. We can see this in our Philip curve right over here. नीचे वाला जो short run वाला है ना, उसमें हम देख सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट कम करनी है, इन्फ्लेशन आएगी, सिंपल, ठीक हो गया। However, if expectations are adopted, the Philip curve become a vertical at the Nairo
at the long run, Philip curve. Expansionary fiscal policy may temporarily reduce the natural rate, sorry, will reduce unemployment, but once workers' expectations are adjusted, unemployment returns back to the same level, to the एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन. तो ये हमारा बेसिकली एक आइडिया है. ठीक है जी. The consequences of fiscal policies are significant if workers and consumers expect higher future inflation. Governments find it much harder to use fiscal stimulus to achieve lower unemployment. Instead, fiscal tightening, such as reducing government spending or increasing tax, may be necessary to curb the inflation. So this is just setting up stage for our evaluative statement about the whole expectation and how does that might work and might not work. तो जब हम उसकी बात करेंगे, so sorry. So in evaluation, the consequence of changing expectation of fiscal policy, there are several points must be considered. एक तो changing expectation depends on the elasticity of SRAS curve. केंद्रीय इकोनॉमिस्ट के हिसाब से शॉर्ट रन के अंदर जो है, स्पेशली रिसेशन के दौरान, जो आपका एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो रिलेटिवली इलास्टिक होता है. यू रिमेम्बर जब आप केंद्रीय के हिसाब से बनाते हैं, वी टॉक वेरी लेस अबाउट इट, बट शॉर्ट रन का कर्व भी इसी तरह से मैं भी ऊपर ऐसे ही बनाते हुए आ रहा हूँ. It's much more elastic at the lower level of prices at the recession level, and it's much more steeper on this side. राइट. सो उसकी इसकी वजह से इन्फ्लेशन के ऊपर कितना इम्पैक्ट आएगा शॉर्ट रन के अंदर, एक्चुअली देर दैट इज व्हाट इट्स अबाउट. यहाँ पे वर्सेस यहाँ पे हम यूजुअली तो LRAS के साथ बनाते हैं, बट इवन शॉर्ट रन के साथ दिस discussion is valid. You won't find this one in much books. So in such conditions, expansionary fiscal policy can still stimulate output and employment without creating upward pressure on the prices. But once you are near full capacity, that is when the inflation is really going to come, and आपका जो ये expectation का issue है, that will fail. Secondly, जो आपका ट्रेडिशनल फिलिप कर्व था, वो 1970 में तो फेल हो गया था. उसके बाद आप आए हो अपने एक्सपेक्टेड फिलिप कर्व के ऊपर. सो द ट्रेडिशनल फिलिप कर्व ट्रेड ऑफ में नो लॉन्गर अप्लाई. Historical evidence shows that during the 1970s, many economies experienced stagflation का concept, right? तो जो कि आपका फिलिप कर्व का जो एक बहुत ही सिंपल सा रैशनल है ना, कि अनएम्प्लॉयमेंट कम करनी है तो इन्फ्लेशन के साथ आपको ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा, दैट इज आउट ऑफ द विंडो. 70s के बाद we've experienced stagflation and we're still experiencing that. But again we do use के नहीं, आज भी डिमांड पुल और कॉस्ट पुश दोनों यूज होता है. Moreover, the structure of labor market has changed significantly since 1960s and 70s. यूनियंस वीक हो गई हैं, लेबर दुनिया भर से मूव कर रही हैं, MNCs मूव कर रही हैं. तो अब वो स्पाइरल वाला इशू अब इतना एग्जैजरेटेड नहीं है जितना बैक इन द डे होता है. अब अगर आपका वर्कर शॉर्टेज है तो आप माइग्रेशन करा सकते हैं, यू कैन गेट रीजनेबली गुड वर्कर्स. यू अंडरस्टैंड? या MNC कैन मूव अब्रॉड एंड देन दे कैन एक्सप्लॉइट वर्कर्स एल्सवेयर. तो वो जो आपका जो नॉन एक्सेलरेटिंग रेट ऑफ इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम है, वो अब खत्म हो जाता है. Additionally, government today are more aware of the dangers of accommodating inflation expectations and are more likely to adopt monetary and fiscal policy focused on maintaining price stability. हमें पता है supply side policies work a lot more effectively, थोड़ा सा long run में ज़्यादा बेहतर work करेंगी, लेकिन employment और inflation दोनों को control में रखना है. So we suggest that supply side policy is a better way forward. So you can always propose an alternative policy over here. ठीक हो गया. तो ये हमारा इसका है. वेरी टफ क्वेश्चन टू अटेम्प्ट. बहुत सारे बच्चे इसके अंदर पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज करेंगे, बट
जो स्मार्टर हैं वो डेफिनेटली फिलिप कर्व और इसका डिस्कशन जरूर जरूर करेंगे. Coming to the last question of the day, in recent years, many countries have joined or established a free trade area. Evaluate with the help of a diagram whether membership of an FTA is always beneficial to a country. सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें कोई खास कॉम्प्लिकेशन तो मुझे नजर नहीं आ रही है, बट लेट्स स्टिल डील विद इट. ठीक है. इसमें हमने क्या करना है? You want to come up with the definition of what is an FTA. You need to learn the examples of FTA. It's there in the last 50 pages again. टैरिफ्स क्या होता है, उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे इम्पैक्ट क्या आता है, दूसरे नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या हो सकते हैं और उसका क्या इम्पैक्ट आ सकता है. नॉन टैरिफ बेस्ड का मतलब हो गया सब्सिडी, quotas, ban, stuff like that. And analysis of pre and post common tariff trade, trade creation and diversion basically, जिसके अंदर we want a very simple सा diagram of the tariff. और उसके बाद, और ये कॉमन टैरिफ वाली बात कर रहे हैं, एंड आई शो यू व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट ओवर हियर. ये तो ज्यादा नजर आ रहा है कि कस्टम यूनियन की बात, और किस तरह से वो कंज्यूमर सरप्लसेस को और प्राइसेस को अफेक्ट करेंगे और इकोनॉमीज ऑफ स्केल और उसको फायदा पहुंचाएंगे. एंड विद योर फाइनल इवेल्युएशन विद इलास्टिटीज के ऊपर इसका इम्पैक्ट कैसा आएगा. एंड आई डोंट सी दैट, बट माइक्रो और मैक्रो के साथ देयर सॉर्ट ऑफ लाइक ब्रेकिंग इट डाउन. तो वन सेकंड. ओके जी. सबसे पहली बात, फ्री ट्रेड एरिया होता क्या है? फ्री ट्रेड एरिया होता है व्हेन अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज they basically go into an agreement where they decide कि हम आपस के अंदर किसी किस्म की प्रोटेक्शनिज्म के ऊपर रिलाई नहीं करेंगे और आपस के अंदर जो है हम फ्री में विदाउट एनी बैरियर्स ट्रेड करेंगे. वेयर एज कि जो दूसरी कोई कंट्री है उसके साथ सब हम अपना अपना एक्सटर्नल टैरिफ लगाएंगे नॉन मेंबर के साथ. एग्जाम्पल्स थोड़ी सी भी अभी से ही क्योंकि आए हो तो अब देख के ही जाओ. EFTA जो यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन है, या आपका यूनाइटेड स्टेट्स मेक्सिको कनाडा की जो अग्रीमेंट है, दिस यूज्ड टू बी कॉल्ड NAFTA, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बैक इन द डे, बट अब ये USMCA है, तो आई थिंक आसान है एब्रीविएशन के हिसाब से. Do look at some of the custom unions and some African ones also. The main aim is to encourage trade amongst each other, right? Promote each other's goods and services and economic growth and welfare and efficiency against a non-member. ये ज्यादातर जोग्राफिकली एक लिमिटेड एरियाज में लोकेटेड होता है, क्योंकि अगर आपके बॉर्डर्स के साथ होता है तो आपका ट्रांसपोर्टेशन में बहुत एडवांटेज मिल जाता है. यू विल हार्डली सी FTAs जिनकी बॉर्डर्स मीट ना करती है. तो आपने क्या करना है, इसका जो डायग्राम बनेगा, बिफोर ज्वाइनिंग एन FTA कंट्रीज ऑफन इम्पोज टैरिफ taxes on imports to protect domestic industries. Tariff raises the price of imported goods and it reduces. मैं इसका डायग्राम तुमको दिखा देता हूँ. ये तो वही बेसिकली जो हम AF में डायग्राम बना रहे थे ना, तो यू कैन डू दैट वन. तो क्या डायग्राम होगा? I hope you don't do the बिल्कुल ही simple वाला. At least make some things complicated. So the diagram we're looking at is this one. Domestic demand, domestic supply, world price. This is world supply, low price के ऊपर. This is domestic demand. This is domestic supply. This is the quantity that we are importing. Okay. A lot of imports happening.
राइट। फिर जब आप टैरिफ लगाते हैं तो आप इधर ऑपरेट कर रहे होते हैं, विच इज PW+T, वर्ल्ड सप्लाई विद टैरिफ। दिस इज द क्वांटिटी दैट यू आर रियली इंपोर्टिंग राइट नाउ। जब आप फ्री ट्रेड में जाते हैं तो नाउ आवर डिस्कशन इज, अच्छा, और आपका जो कंज्यूमर सरप्लस है टैरिफ लगाने के बाद, आपका कंज्यूमर सरप्लस इज ओवर हियर। ठीक है। फिर जब आप टैरिफ हटाते हैं तो अब मैं शो करूंगा विद माय एरोज कि टैरिफ हटाने से कुछ ये होगा। टैरिफ हटेगा, प्राइसेस गिरेंगी, कंज्यूमर सरप्लस के अंदर एक ये एरिया का एडिशन आ जाएगा। यू फॉलो? ठीक हो गया। तो ये कंज्यूमर सरप्लस के अंदर एक बहुत मेजर इंक्रीज नजर आ रहा है, प्राइसेस आर फॉलिंग, मोर क्वांटिटीज आर बीइंग सोल्ड। ऑब्वियसली बाहर से इंपोर्ट जो है वो ज्यादा आ रहा है, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स आर लूजिंग आउट बिकॉज डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स पहले PW+T एंड Q3 का रेवेन्यू कमा रहे थे, अब बेचारे सिर्फ इतना कमाएंगे। इंपोर्टेड गुड्स ऑफ मैन्युफैक्चरर को फायदा होगा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल होगा, अच्छी एफिशिएंसी होगी, यू गोना बी प्रमोटिंग एफिशिएंट प्रोड्यूसर्स, so that's a good positive thing। ठीक है। So the removal of tariffs from an FTA can be illustrated using a basic demand and supply with the domestic markets। बिफोर ज्वाइनिंग आपकी प्राइसेस क्या थी, कंज्यूमर सरप्लस क्या था, और फिर उसके बाद क्या हुआ, आई हैव एक्सप्लेन्ड। सो यू विल डू द सेम। मेंबर्स ऑफ एन एसपीए कैन बूस्ट प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, क्योंकि जब आपको ज्यादा सेल्स मिलेगी तो ये आपका फायदा है ना, यू गेट एक्सेस टू बिगर मार्केट्स, you will be able to specialize, you will be able to produce larger quantities for larger markets, allowing you for economic efficiency. Your average cost falls, your competitiveness increases, good win employment generates, economic growth goes up, all good things happen, which is talked about over here। Furthermore, cheaper access to inputs भी मिलेंगे, अब आप रॉ मटेरियल बगैर ड्यूटीज के मंगा सकेंगे, उससे आप और अच्छे गुड्स बनाएंगे और अच्छा गुड सेल करेंगे। जबरदस्त, कंट्रीज लाइफ इज गुड, जबरदस्त हो जाएगा। ठीक हो गया। बट देन यू टॉक अबाउट एन ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव के अंदर अगर तुम्हें एक सिंपल सा ऑल्टरनेटिव सीखना है तो वो ये है, पहले आप फ्री ट्रेड से पहले, लेट्स से यूएसए, कनाडा, मेक्सिको का आपस के अंदर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हुआ है। फॉर कनाडा, मेक्सिकन प्रोडक्ट्स एंड यूएस प्रोडक्ट्स आर एक्सपेंसिव, चाइनीज प्रोडक्ट्स आर वे चीपर, राइट? एंड वी नो द रीजन व्हाई। आप चाइना से प्रोडक्ट्स मंगा रहे हैं सस्ते रेट पे, आप उससे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, आप बाकियों को भी बेच रहे हैं, अब आप आ गए फ्री ट्रेड एरिया के अंदर, और अब आप ड्यूटीज जो है पहले उन पे भी लगा रहे थे, चाइनीज पे भी और यूएस पे भी लगा रहे थे, अब यूएस पे से आप हटा रहे हैं, तो आप एक एडेड एडवांटेज दे रहे हैं अपने मेंबर्स को, एंड यू आर मूविंग अवे फ्रॉम अ मोर एफिशिएंट प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट? सो ये एक तरीके की ट्रेड डाइवर्जन होती है। ओके। यहाँ पे हम इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट्स के अंदर, while joining an FTA can bring significant benefits, it is not always guaranteed that it will benefit all countries। एक तो माइक्रो इफेक्ट्स के इलास्टिसिटी पे डिपेंड करता है। इफ व्हाट आई एम सेलिंग इज इन इलास्टिक, तो कंज्यूमर सरप्लस में काफी बड़ा इंक्रीज आएगा, बट इफ इट्स इलास्टिक देन इट्स नॉट गोना मेक मच ऑफ एन इम्पैक्ट। ये जो डायग्राम हमने ऊपर किया है, इसी डायग्राम के अंदर अगर तुम इलास्टिक बना दोगे तो यू कैन सी दैट, यू नो, इंपोर्ट में ज्यादा बड़ा इंक्रीज आ रहा है, डोमेस्टिक फर्म्स को ज्यादा बड़ा हार्म आ रहा है, दैट इज क्वाइट पॉसिबल। सेकेंड, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कैन राइज। आपकी डोमेस्टिक फर्म्स आर फेसिंग चैलेंजेस कि भाई हम एक काम में अच्छे थे, अब आपने टैरिफ हटा दिए हैं, अब वहां से सीरियस कंपटीशन आ रहा है। फॉर एग्जांपल, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, China goes into free trade agreement,
Now, Bangladesh is way better in textiles compared to us. तो फिर क्या होगा? We'll start importing stuff from there. So Pakistani textile industry is going to take a big hit, and it's going to be a structural unemployment that's going to happen, which is going to bring lots and lots of its own structural problem in our economy. ठीक हो गया? फिर ऑब्वियसली देयर आर नेगेटिव एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस जब आप इसमें जाते हैं, लार्जर क्वांटिटीज वगैरह की तरफ जाते हैं, तो एक्सपोर्ट्स ओरिएंटेशन की वजह से यू माइट एंड अप पोल्यूटिंग अ लॉट मोर। फ्रॉम द मैक्रोस पॉइंट ऑफ व्यू, आपकी इकोनॉमी पे डिपेंड करता है कि आपकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू एक्सपोर्ट या मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट किस लेवल के ऊपर है। अगर आपका इंपोर्ट की प्रोपेंसिटी बहुत ज्यादा है तो क्लियरली there's a lot more money that is going to go out. लेकिन अगर आपके पास एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज अच्छी हैं एज कंपेयर टू इंपोर्ट, देन इट विल हैव अ वेरी पॉजिटिव, बिकॉज इंजेक्शन आएंगी ना, तो इकोनॉमी इज एक्चुअली गोइंग टू डू बेटर। Additionally, trade creation must be weighed against trade diversion. If an FTA causes a country to switch from a low cost world producer outside the bloc to a high cost producer within the block, economic efficiency can actually fall out. इसका मैं डायग्राम करा देता हूँ तुमको, एक सेकंड दो। दिस इज द डायग्राम फॉर इट, जो आप बनाते हैं इन द केस ऑफ डाइवर्जन। ओके, फॉलो वेरी केयरफुली। डोमेस्टिक डिमांड, domestic supply. China can produce this good at a very low price. Okay. As compared to that, जो आपके ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, like say US and Mexico. So this is, you can say, in fact, let me just add these over here. This is non-member. This is member. And let's say चाइना के ऊपर जब हम टैरिफ लगाते हैं, तो दिस इज द चाइनीज प्लस टैरिफ। ठीक है जी। What are we doing here? हो ये रहा है बेसिकली। गौर से सुनो, चाइना की प्राइस बहुत लो है बिकॉज वो एक बहुत ही एफिशिएंट प्रोड्यूसर है। अगर हम उन पे ट्रेड बैरियर्स ना लगाएं तो हमें इतना सारा इंपोर्ट करना पड़ेगा, और लोकल फर्म्स आर टेकिंग बिग हिट। ऑलराइट, हमने क्या किया? चाइनीज पे टैरिफ लगा दिया, मेड द प्राइस गो अप, एंड नाउ वी आर इंपोर्टिंग वेरी लेस। और हम अच्छा खासा क्या कर रहे हैं? टैरिफ भी लगाया हुआ है उनके ऊपर। अगर देखा जाए तो कितना टैरिफ? ये टैरिफ, दिस इज द टैरिफ। गवर्नमेंट को टैरिफ भी मिल रहा है, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को भी फायदा हो रहा है, इतना सारा रेवेन्यू। बट ऑब्वियसली हम चाइनीज को हर्ट कर रहे हैं, उनकी एफिशिएंसी को हर्ट कर रहे हैं बाय टैक्सिंग दैम, तो प्राइसेस कम हो रही हैं। अब इशू ये है कि आप इंसिस्ट करते हैं कि जो मेंबर कंट्रीज हैं हम आपस के अंदर प्रमोट करना चाह रहे हैं, तो बेसिकली हम आपस में यू नो विदाउट टैरिफ ट्रेड करेंगे। तो व्हाट यू बेसिकली डूइंग इज यू सॉर्ट ऑफ लाइक कटिंग डाउन ऑन योर प्राइसेस, क्योंकि अब आप फ्री ट्रेड जब करेंगे तो यू हैव टू डील विद द प्राइसेस जो यूएस की प्राइस है। यू कुड हैव वर्कड, अगर आपको टैरिफ के बगैर ही काम करना था तो आप बिल्कुल चाइना से काम कर सकते थे बहुत लो प्राइसेस के ऊपर। उसमें चाइना भी अच्छा प्रमोट करता, आपको भी अच्छे प्रोडक्ट्स मिल जाते, लेकिन आपने टैरिफ लगा के अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट किया, और गवर्नमेंट को भी कुछ अच्छे खासे पैसे मिल गए। लेकिन नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज कि बिकॉज यू बिकम अ पार्ट ऑफ द मेंबर स्टेट,
तो अब आप बेसिकली इस प्राइस के ऊपर डील करेंगे, और उसकी बेसिस के ऊपर अब जो इंपोर्ट होगा वो ये होगा, इंपोर्ट की जो क्वांटिटीज होंगी विद चाइना एंड ऑल, सॉरी विद द यूएस, जो आपके मेंबर ट्रेड्स हैं, तो दिस इज द क्वांटिटी एट विच यू गोइंग टू बी ट्रेडिंग विद दैम। ऑब्वियसली जो कंज्यूमर है उसको तो फायदा हो ही रहा है इस पूरे सिनेरियो के अंदर। देयर इज सिल्वर लाइनिंग ओवर हियर दैट कंज्यूमर सरप्लस विल राइज, जो कि पहले जब चाइना के साथ जब हम टैरिफ बेस्ड काम कर रहे थे तो दिस वाज योर सरप्लस, बट देयर इज ऑब्वियसली एन एडिशन ऑफ द रेड एरिया, so there is a loss of the government and the producers, domestic producers, so there is a trade diversion that is taking place। और अगर टैक्स टैरिफ फ्री काम करना था तो चाइना के साथ टैरिफ फ्री काम करते और सस्ते आपको गुड्स एंड सर्विसेज मिलते, कंज्यूमर सरप्लस वुड हैव बीन अ लॉट मोर बेटर। तो दिस कुड हैव बीन वन ऑफ योर डायग्राम्स। इसके ऊपर ऑनेस्टली इस डायग्राम के बगैर भी आप अच्छी खासी अपनी वैल्यूएशन लिख सकते हैं in terms of how the country's comparative advantage is going to get affected and employment's going to get affected and how open they are, how their efficiency will get affected. So there's lots that you can write other than what we are discussing over here. ठीक, तो ये हमारा एजेंडा है। That's sort of like conclude